Assalamualaikum, myself Ali. Today I'm going to explain you about the PWM. So basically PWM is the pulse width modulation. So the pulse width modulation is basically reducing the average power delivered by the electrical signals, or we can say that we can control any speed or duty cycle or any performing thing. If we talk about the motors or moving things, then we can slow down their speed or we can increase their speed with respect to time or with respect to their duty cycles. Or we can say that if I'm going to talk about an LED, then I can say that we can lower its brightness or high brightness. So this is how we can change the waves, we can change the pulses, we can reduce the cycles, or we can generate waves with a different duty cycles. So further on, it is pulse width modulation here and duty cycle here. So the duty cycle term stands for the a time period or high. It can be low or it can be a high duty cycle. Further on, this is thing here like 52% duty cycle. It is off for a 50% on and 50% off. If we talk about the 75% duty cycle, then 75% on and 25% off. So the first task of this PWM is here. It is simple that we have to, there is a switch of pin lightness of LED increase gradually from 0 to 100% and then decreases the 100% to 0. It is like that we have to get high from from 0 brightness increases and goes to 100, and from 100 to 0, or we can say that a bulb which is dim, then it get to bright, and bright from bright to it get low and finally off. So here it is a code simple. We define a pin here and further we define the code pins here, command BGM. We set the, and onward we set the scale here. And the thing is that we set a comparative resistor at 40 here. Now plus equal to 40, that is incrementing the 40 here, that it is incrementing the 40, or we can say that incrementing in the brightness here, that every time the loop run a 40% is added and a brightness of the LED increases. If I talk about the simulation, then simulation did not work properly for an LED to get low to high, but so we use this oscilloscope here, and this oscilloscope show this result here. So we can see there is, we start about like that here. This is 50-50 duty cycle, and then further kind of we can see the 25 and the 10%, 5% like so. This is how this decreases here. So let me show you as video 2 of hardware, that how we perform it is in the on the hardware here. सर ये इसका हार्डवेयर पे है, पोर्ट बी की हमने आखिरी पिन यूज़ की है, ठीक है। इस पर हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, OCR की वैल्यू को 0 से लेके 255 तक, और उसकी जो है वो ब्राइटनेस में आ रहा है फ़र्क। पहले बिल्कुल डिम होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। ये देखें सर, ऐसे ये इसका कोड है। पहले इसमें TCCR0A पे मैंने कन्फिगरेशन की हुई है, उसके बाद TCCR0B पे 1 भेजा, मतलब कोई प्री स्केलिंग वैल्यू नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वही है। उसके बाद OCR0A से वैल्यू कंपेयर होती है CTC मोड में ना, तो वो हमने पहले 0 इनिशियलाइज कराई हुई है। तो वाइल लूप के अंदर हमने एक फॉर लूप चलाया है, और जो OCR0A है, क्योंकि हम चाहते हैं कि LED ग्रेजुअली ब्राइट हो, तो OCR0A की वैल्यू हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो उससे होगा ये कि ड्यूटी साइकिल ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा और LED ब्राइट होती जाएगी। उसके बाद जब वो मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, तो हम उसको वापस दोबारा लूप को रन कर देंगे और वो फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा।
And further, this is the second task of the PWM. And in this task, similarly as we defined above, we, we use the interrupts here. So on where to find the S register before enable that, which interrupts we are going to use. We are going to use the 0, 1, 2, 3, and 4. So we enable all the interrupts here. And further on, we don't set any piece killer here. And further, we set a comparative register equal to the duty cycle and the interrupts here defined. So further, whenever any interrupt called here in this, then it goes there. So according to that interrupt, if I'm going to click, for example, this is interrupt 0, 1, 2, 3. So if I'm going to click the interrupt 1, then the motor stopped at 0, no the PWM. And if I'm going to use this, then going to speed increases. With respect to this button, the speed increases of the motor by clicking them. Let me show you a video here of how to सर use ये this. वो पूरा कोड है जो आपने कहा था कि हम लोगों ने इंटरप्ट से करना है, 5 पुश बटन लगाने हैं, ठीक है, और ये 5 इंटरप्ट यूज़ करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है। बेसिकली PWM को हम कंट्रोल कर रहे हैं 0 से लेके 255 के दरमियान। अब सबसे पहला जो बटन है हमारे पास वो इंटरप्ट 0 के लिए हमने यूज़ किया है, जिसमें हम लोगों की मोटर जो है वो स्टॉप रहेगी, ठीक है। इससे अगली कंडीशन ये है कि जब हम लोग अपनी मोटर की स्पीड को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने ड्यूटी साइकिल रखा है 150 से, ये 150 ड्यूटी साइकिल पे चल रही है। अब इसी तरह हम ड्यूटी साइकिल को बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी मोटर की स्पीड को देखते जा रहे हैं। जैसे जैसे उस इंटरप्ट को कॉल जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, वैसे वैसे मोटर की स्पीड चेंज होती जाएगी। अब जब हम इंटरप्ट 2 को कॉल करते हैं, मोटर की स्पीड तेज़ हो गई है। अब इंटरप्ट 3 को कॉल करते हैं तो और तेज़ हो जाएगी। ऐसे जब हम इंटरप्ट 4 को कॉल करेंगे तो ये अपनी फुल स्पीड पे चल रही है। वापस इंटरप्ट जब इंटरप्ट 0 करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी।